quickly let me know so that we can start with today's session. Good evening, one and all. Good evening, all of you. I welcome all of you on the MEPL channel. MEPL के चैनल पे आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. क्या हम लाइव आ चुके हैं? Yes. Good evening, guys and girls. Good evening. Just फटाफट mark your attendance so that I understand who all is watching the session. And all of you quickly let your friends know that we are starting with today's session. हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. आपके दोस्तों को फटाफट बोल दो. यस, गुड इवनिंग अवंती, गुड इवनिंग सुषमा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. और कौन कौन है लाइव? who else is live? I know guys, it is Saturday evening, weekend, but you have to promise me to be there till 11 o'clock with me so that we complete the valuation topic and then time of supply. We have to do valuation as well as time of supply. Yes. Okay, Lakshmi ji. Taken. Your request is taken. देखते. Chalo guys, shall we start? I'm just waiting for all to join and so that we can start with today's critical session. And uske pehle I'm quite sure you must have subscribed to this channel and you must have liked the video already. And all of you must have hit the bell icon so that आपका कोई भी important notification miss ना हो जाए. Yes, you can watch this video. Executive students, intermediate students, everyone can watch this video. Those who have your exams and those who want to learn. Chalo guys, so without wasting much time, let's go ahead, let's start. So yesterday we have seen many rules as far as valuation is concerned. It's rule number 27 to 35. From that we are checking rule number 32. So is it clear to you, all of you, what we have discussed yesterday? Now, one rule to be discussed today is, when there is a dealer of second-hand goods, then what happens in that case? That dealer of second-hand goods is purchasing some goods and then selling them. Correct? He is purchasing the goods and selling them. Mostly he is purchasing those goods from unregistered person, isn't it? He is purchasing the goods from unregistered person. So guys, in this case, what is said? The value of supply shall be selling price minus purchase price. All of you write in the comment box what is the value of supply in this case for the person who is dealing in second-hand goods. For person who is dealing in second-hand goods, the value of supply is selling price minus purchase price. So what happened? Check. In this question, check. 16th question on your page number in your sheet of notes for time of supply and value of supply. 16th question, guys. Mr. Rohan is engaged in buying and selling of second-hand cars in Jaipur. During the month of December 18, he supplied a used car after some processing at 6 lakh. He supplied for 6 lakh. Means, do you agree that selling price is 6 lakhs, which he purchased from customer at 4 lakh 50,000? At 5 lakh 40,000. So 5 lakh 40,000 is his purchase price. Do you agree with me? 540 is his purchase price and 6 lakh is his selling price. So guys, what will be the value of supply in this case? Kya hogi value of supply? And no ITC has been availed on such purchase. So what is the value of supply in this case? So guys, value of supply is 6 lakh minus 5 lakh 40,000, that is 60,000.
क्या सबको ये बात समझ में आ गई? Did you all understand this simple rule? Yes or no? So see, what is this rule saying? Where taxable supply is provided by person dealing in buying and selling of second hand goods, okay, that is used goods as such or after such minor processing which does not change nature of goods, and where no ITC has been availed on purchase of such goods, then the value of supply shall be difference between, yes guys, difference between selling price and purchase price. So assessable value is going to be 60,000 rupees. Is it clear? 6 lakh minus 5 lakh 40,000. But one thing to be understood now is, what would be your answer? What will happen if difference between selling price and buying price is negative? In certain cases, it may happen that as a dealer of second hand goods, I am not finding the correct buyer. So finally, what I do, I sell the goods at a loss. Okay. So in that case, what will be the assessable value? For example, in above case, what will happen if your purchase price was 6,20,000? If your purchase price was 6,20,000, you know your selling price is 6 lakh. So 6 lakh minus 6,20,000, isn't it? Selling price 6 lakh minus purchase price 6,20,000. So negative 20,000. So guys, tell me, can value be negative in this case? If it so happens that difference between sale price and purchase price is coming as negative, तो क्या होगा? Then what will happen? Then your value of supply will be nil. Is it clear to all of you? That, see, in case 2, as per rule 32 sub rule 5, value of supply of second hand goods shall be difference between, of course, selling price and purchase price. And importantly, where the value of such supply is negative, it shall be ignored. Getting it? So value in this case shall be nil. Quickly guys, tell me whether this rule is clear to you till this point. Yes or no? Sonia, Ahmed ji, Ragini, Lakshmi, Sandeep, Rucha, Mamta, Ashwini, Varun, yes, Chandni, Mobani, Rucha, Fadafat, tell me no. Tell me guys, is this point clear to all of you? Yes, yes. Very good, very good. Let's go ahead. Let's go ahead. Now, one twist here, twist in the sense, one thing, one interesting thing will happen in this case. If it was a bank or a financial institution, if it was a bank or financial institution, okay, which has repossessed the goods and sold, which has repossessed the goods and sold, मतलब एक बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which has given you loan, which has given one person loan, but that person is not repaying the loan. So what will bank do? Bank will pick up his car, not literally, bank will take possession of his car, okay, and bank will sell this car, isn't it? So do you agree, क्या आप मुझसे एग्री करते हो कि here bank is selling the second hand goods? Do you agree with me that bank is selling second hand goods? So obviously assessable value for bank also will be sale price minus purchase price. Do you agree with me? Sale price minus purchase price will be assessable value for bank also.
but interesting thing is purchase price is not available. Why purchase price is not available? Because bank has not purchased the goods. बैंक ने ये गुड्स परचेस नहीं किए हैं. बैंक ने क्या किया है? बैंक हैज repossessed the goods. Yes or no? Bank has repossessed the goods. Compulsorily bank has gone and repossessed these goods. So you have to calculate the purchase price. So ये purchase price you have to compute or you have to calculate. How do you calculate it? How do you calculate it? Simple है. Original purchase price is there. Yes or no? From original purchase price, chalo, originally who purchased the goods? Originally the borrower had purchased the goods. Yes. So original purchase price minus you have to depreciate. Do you agree with me that you will have to depreciate? Yes. So you will depreciate at 5 percentage points for every quarter or part thereof. For every quarter or part thereof. Do you agree with me? Yeah, you will have to depreciate the value of the car because the car is originally purchased few days back, few months back. Yes, so please depreciate it. At what rate you will depreciate it? 5% for every quarter or part thereof. Okay, अब sum देखते हैं. We will see a sum and try to understand in much more depth as usual. नहीं तो सम नहीं देखा तो क्या मैं हवा में बोलते रह जाऊंगा. I'll just keep on talking without making sense if we don't see a sum. So 17th question. Check guys, 17th question. Okay, are you all with me? एक बार मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बोल दो कि are you all with me for this 17th question. आज दोस्तों वैल्यूएशन तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली एंड उसके साथ टाइम ऑफ सप्लाई भी कंप्लीट करना है. एकदम सेटिस्फैक्टरी वे में, वंडरफुल वे में कंप्लीट करना है. ऐसे नहीं कि भागना है. ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं गाइस. क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर एक्स परचेज द मोटर कार ऑन 1st October 2018. Okay, for 20 lakh. 20 lakh is the original purchase cost. 80% of the purchase price of car was financed by Easy Finance. I am scratching this because ये सम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है. क्या इग्नोर करना चाहिए ये भी समझना चाहिए ना. तो सम सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंफॉर्मेशन. लोन वॉज पेएबल इन 60 इंस्टॉलमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. बिगिनिंग विथ सो एंड सो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. मुझे क्या चाहिए कि बैंक ने कितने को सेल किया ये रिपोजेस्ड कार एंड कितनी उसकी डीम्ड परचेस कॉस्ट होने वाली है. मिस्टर एक्स डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इजी फाइनेंस लिमिटेड repossessed the car. When did it repossess is immaterial. ये भी immaterial है. Important क्या है कि बैंक ने ये गाड़ी कब बेची. When did bank sell it? So bank, the car was disposed on this date 10/12/2019 for 15,50,000. बहुत ही इंपॉर्टेंट है 15,50,000. So guys, 15,50,000 is the sale price. Do you agree? 15,50,000 is the sale price. अब सिर्फ कंप्यूट करना है परचेस कॉस्ट.
आप बोलोगे परचेस प्राइस 20 लाख है, 20 लाख ओरिजिनल परचेस प्राइस है, बट 20 लाख नहीं ले सकते क्योंकि डेप्रिशिएट करना है। ओके, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टरली बेसिस। गाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? एक बार मुझे बोलो कमेंट बॉक्स में, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टरली। क्वार्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हमें आता है, आई नो आपको आता है, लेकिन यहां पे जो डेफिनेशन है क्वार्टर्स की वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के हिसाब से होती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से क्वार्टर कैलकुलेशन होता है। सो हाउ आर क्वार्टर्स कैलकुलेटेड? 1 अक्टूबर 18 से लेके 1 अक्टूबर 18 जब कार परचेस की गई थी उस डेट से लेके, गाइस उस डेट से लेके इस डेट तक कितने क्वार्टर्स हुए हैं ये देखना है। 10 दिसंबर 19 कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ शैल वी कैलकुलेट? देखो, क्वार्टर इज consecutive 3 months. Quarter means period of consecutive 3 months in a calendar year, ending last day of, yes, ending last day of June, September, December, March. So guys यहां पे आपको देखना है 1 अक्टूबर 18 के बाद विच क्वार्टर कम्स टू एन एंड। सो एंड होता है क्वार्टर 31 दिसंबर 2018 वाला, तो ये हो गया एक क्वार्टर। नेक्स्ट एंड होता है 31 मार्च 19 वाला, ये हो गया सेकंड क्वार्टर। नेक्स्ट एंड होता है 30 जून 19 वाला। नेक्स्ट एंड होता है 30 सितंबर 19 वाला। अभी भी हमने सेल नहीं किया है, हमने सेल किया है 10 दिसंबर 19 को, तो 31 दिसंबर 19 वाला क्वार्टर भी कैलकुलेट होगा क्योंकि पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी कंसिडर होता है। तो गाइस कितने क्वार्टर आ गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5। चलो 5 क्वार्टर्स आ गए, ऑल ऑफ यू गॉट 5 क्वार्टर्स। तो नाउ यू डू 5 इंटू 5। कितना आ गया? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 आ गया 25। तो प्लीज डेप्रिशिएट 20 लाख बाय 25%। हाउ मच विल बी 20 लाख माइनस 25%? व्हाट इज 20 lakh minus 25% of 20 lakh? Is it 5 lakhs? So you will minus 5 lakh. So what will be your deemed purchase cost? Is your deemed purchase cost 15 lakhs? Is your deemed purchase cost 15 lakhs? So now tell me, guys, now tell me, what is your assessable value? What is the assessable value? Is the assessable value, Anisha ji, is the assessable value 15 lakh 50,000 minus 15 lakhs? So is the assessable value 50,000 rupees? Check. Assessable value is 50,000 rupees. Did you understand? Very good, very good. Simran ji, very good. Very good, Anisha ji, wonderful. Very good, Mamta. Rucha, very good. That's it. That's it. समझ में आया ना? That's very important. यहाँ पे डिटेल में दिखाया है वर्किंग कैसे करना है। ओके चांदनी जी, वेरी गुड। चलो क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? कैन वी गो अहेड?
कैन वी गो अहेड नाउ? यस, तो आप सबको रूल 32 में अभी तक क्या क्या समझ में आया है? रूल 32 में आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, ओके, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में वैल्यू कैसे निकालते वो समझ में आ गया है। उसमें नॉर्मल मेथड एंड ऑल्टरनेटिव मेथड विच इज डन बाय वे ऑफ स्लैब्स। उसके बाद एयर ट्रैवल एजेंट का समझ में आ गया है, डोमेस्टिक बुकिंग एंड फॉरेन बुकिंग। डोमेस्टिक बुकिंग में इट इज 5% ऑफ बेसिक फेयर, एंड फॉरेन बुकिंग और इंटरनेशनल बुकिंग वॉट एवर यू कॉल इट, इट इज 10% ऑफ बेसिक फेयर। एंड लाइफ इंश्योरेंस का भी समझ में आया, करेक्ट। एंड अभी समझ में आ गया फॉर सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो क्या यहां तक वैल्यूएशन टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है? इज द वैल्यूएशन टॉपिक क्रिस्टल क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? चलो 32 को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एकदम फॉर्मेलिटी बच गई है 32 में। क्या फॉर्मेलिटी बची है? व्हाट इज द फॉर्मेलिटी नाउ पेंडिंग इन 32? देखो, सब कुछ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, ओके। चलो गाइस, चलो लेट्स गो टू सेकंड हैंड गुड्स हो गया, ओके। वैल्यू ऑफ टोकन, वैल्यू ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन, एक्सेट्रा, ओके। एकदम एज अ फॉर्मेलिटी वी हैव टू डू दिस। बहुत ही सिंपल प्रोविजन है, ओके। डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। मिस्टर एंड मिसेस बी परचेस 5 गिफ्ट वाउचर्स। क्या किया उन्होंने? 5 गिफ्ट वाउचर्स परचेस किए, 1000 ईच के, फ्रॉम रेमंड्स, एंड गिव देम एज रिटर्न गिफ्ट्स to children and their parents on their son's birthday. What is the value of supply? अब मतलब गलती करना चाहोगे इसमें तो भी गलती नहीं कर सकते, ओके। रेमंड्स ने जो वाउचर्स बेचे हैं, 5 गिफ्ट वाउचर्स बेचे हैं, हर एक वाउचर 1000 रुपए का बेचा है। तो ऑब्वियसली गाइस, रेमंड्स ने जो सप्लाई किया है उस सप्लाई की वैल्यू होगी 5000। यस और नो गाइस? यस और नो? सोनिया जी, समझ में आया कि नहीं? तो क्या बोलता है रूल 32 सब रूल 6? द वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स रिडीमेबल अगेंस्ट द वाउचर। सो क्या है मनी वैल्यू ऑफ गुड्स रिडीमेबल अगेंस्ट वाउचर इश्यूड बाय रेमंड्स? ऑब्वियसली 5000 रुपए के वाउचर्स रेमंड्स ने बेचे हैं, तो एसेसेबल वैल्यू 5000 ही होगी ना? यस और नो? अब आप मुझे आप मुझे इजी कूपन्स लिमिटेड का आंसर बता दो। इजी कूपन्स लिमिटेड sells coupons that are redeemable against special cosmetic products at retail outlets. Each coupon has face value of 1500, but ये देखो, यहां पे आप गलती कर सकते हो। कूपन की फेस वैल्यू 1500 है, बट ऑन दैट यू कैन टेक गुड्स ऑफ 1750। 1500 के कूपन फेस वैल्यू 1500 है, बट उसके अगेंस्ट आप 1750 के गुड्स ले सकते हो। तो क्या होगी एसेसेबल वैल्यू? तो गाइस, एसेसेबल वैल्यू यहां पे होगी 1750 being the money value of goods redeemable against the coupons. Money value of goods redeemable against the coupons. Very good, Chandni ji. Well done. वेल डन, वेल डन। तो क्या सबको अभी तक कंफर्ट लेवल है वैल्यूएशन टॉपिक में? यस, यस। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड नाउ।
अब मुझे आपको बोलना है रूल नंबर 33। ओके, मुझे ये याद दिलाना कि सर 31A भी करना है। कौन सा? 31A भी करना है। वी विल डू 31A ऑल्सो। ओके, मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे लिस्ट तो लिख दी है, करेक्ट और नॉट? पहले आपके लिए लिस्ट यहाँ पे लिख दी है मैंने, तो वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट एब्सोल्युटली। बस 31A बचा है, वो भी करेंगे, मुझे याद दिलाओ इमीडिएटली बिफोर गोइंग टू टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखते हैं 33 क्या है। 33 है प्योर एजेंट। तो ऐसा मत समझो कि प्रिंसिपल एजेंट ऐसे कुछ रिलेशन है, ऐसा मत सोचो कि एक प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को अपॉइंट किया है, यहां पे ये रूल आएगा, ऐसे मत सोचो। एनीवन, कोई भी एक्ट कर सकता है एज प्योर एजेंट। एनीवन कैन एक्ट एज प्योर एजेंट। एज अ प्रोफेशनल वी कैन एक्ट एज अ प्योर एजेंट। कैसे? आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीएमए हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप कोई भी हो, आपने क्या किया है? आपने आपके क्लाइंट का एडवांस टैक्स कैलकुलेट किया है। गाइस बोलो चैट विंडो में, आपने क्या किया है? आपके क्लाइंट का एडवांस टैक्स कैलकुलेट किया है। समझ में आया? वो एडवांस टैक्स था 5 लाख रुपए। कितना था एडवांस टैक्स? 5 लाख। राइट? एडवांस टैक्स वॉज 5 lakhs। नाउ इट सो हैपेंड, अब ऐसे हुआ कि you contacted that client that tomorrow is the due date for paying advance tax, but your client said, and your client happens to be your family member and a very trustworthy person, your client said you pay advance tax on my behalf right now। तो आपने आपके पॉकेट से उसके लिए 5 लाख पे किए। गॉट इट? यू पेड 5 लाख रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट। समझ में आया दोस्तों? अभी तक समझ में आया? यू पेड 5 लाख फ्रॉम योर पॉकेट। अब आपने जब आपके दोस्त को बिल दिया, आपने जब आपके दोस्त को बिल दिया आपके प्रोफेशनल फीस का, तो उस बिल में लिखा एडवांस टैक्स अमाउंट रीएम्बर्समेंट 5 लाख एंड प्रोफेशनल फीस फॉर कैलकुलेटिंग एडवांस टैक्स 10,000। नाउ कैन यू टेल मी लॉजिकली जीएसटी कौन से अमाउंट पे आना चाहिए? जीएसटी 5 लाख पे आना चाहिए, या 5,10,000 पे आना चाहिए, या 10,000 पे आना चाहिए? Guys, I want its answer from you. GST now should be charged on 5 lakh or 5,10,000 or 10,000? आपको क्या लॉजिकल लगता है? बोलो मुझे, आपको क्या लॉजिकल लगता है? जीएसटी कौन से अमाउंट पे चार्ज होना चाहिए? 5 लाख के ऊपर, या 5,10,000, या 10,000? इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो ऑब्वियसली गाइस जीएसटी आना चाहिए ऑन 10,000 रुपीज। सोनिया जी जीएसटी आना चाहिए 10,000 पे। जीएसटी शुड बी ऑन 10,000। आपने क्या किया है? एज अ एजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट आपने पे किया, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट आपने पे किया 5 लाख। तो 5 लाख इज नॉट वैल्यू ऑफ योर सप्लाई। रुचा जी आप मानते हो उसको? 5 लाख इज नॉट वैल्यू ऑफ योर सप्लाई। योर सप्लाईज वैल्यू इज ओनली रुपीज, yes, your supplies value is only rupees 10,000। yes, Bhargav has given correct answer, very good। संदीप जी आंसर 5,10,000 नहीं है, आंसर इज 10,000। आप मुझे बोलो 5 लाख रुपए आपके पॉकेट में रह गए
या 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को गए, एंड 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने किसने थे? आपके क्लाइंट ने देने थे. यू हैव पेड टू द गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ फॉर टाइम बीइंग. यस और नो? तो एसेसेबल वैल्यू शुड बी 10,000. इन शॉर्ट 5 लाख होने चाहिए एक्सक्लूड, 5 लाख होने चाहिए एक्सक्लूड, एंड एसेसेबल वैल्यू शुड बी 10,000. क्या है लॉजिक समझ में आया? क्या है लॉजिक समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक गाइस? दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि इस लॉजिक के ऊपर ये फुल प्योर एजेंट वाला रूल डिपेंडेंट है. इस लॉजिक के ऊपर ये फुल प्योर एजेंट वाला रूल डिपेंडेंट है. एक आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, सो दैट देखो एक्चुअली ना आपको जो लगता है ना बड़े सम्स होते हैं या जो प्रोविजंस बहुत ही आपको जो कष्ट देते हैं ना, प्रोविजंस, जो प्रोविजंस आपको बहुत सताते हैं ना, उस प्रोविजन का जड़, द रूट ऑफ दैट प्रोविजन इज एक्चुअली इन द बेसिक. तो गाइस बेसिक ठीक से समझ लो प्लीज, अंडरस्टैंड बेसिक. आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्योर एजेंट. अब देखो आपको मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं. आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स. You tell me what will happen in each of the example. Okay, there is a CA. There is a CA in both the cases. There is a CA in both the cases. What did that CA do? That CA charged. That CA charged company incorporation fees. CA charged company incorporation fees. How? Reimbursement of, you can say, ROC charges, register of company charges. सपोज ये थे 10,000 रुपए, एज्यूम वो थे 10,000 रुपए, और his and what he charged, his professional fees for incorporation of company. His professional fees for incorporation of company 5,000. So this way total he has charged is 15,000. उसने टोटल 15,000 चार्ज किया. क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू क्या होगी? क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू क्या होगी? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एसेसेबल वैल्यू हियर? यस गाइस, आपने आंसर बोलना ही चाहिए मुझे. टेल मी, वेटिंग फॉर योर आंसर. आपका आंसर आने के बाद मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूं. चलो फटाफट गाइस. वेरी गुड, वेरी गुड. Accessible value here, now all of you have understood, is 5,000. yes. और एक एग्जांपल बताता हूं आपको. एक सीए है, उसने ऑडिट फीस चार्ज की 10,000 रुपए, एंड ट्रैवल एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट चार्ज किया 5,000 रुपए, एंड टोटल चार्ज किए 15,000 रुपए. नाउ गाइस टेल मी, इन दिस सेकंड केस व्हाट इज योर आंसर? इस सेकंड केस में एसेसेबल वैल्यू क्या है? इस सेकंड केस में एसेसेबल वैल्यू क्या है? टेल मी गाइस. इससे मुझे समझ में आएगा कि क्या आप तक ये प्रोविजन ठीक से पहुंची है. हैज द प्रोविजन रीच टू यू करेक्टली? What should be the accessible value in this case when CA is charging
Audit fees of 10,000 and traveling expense reimbursement 5,000. Wonderful. Wonderful. Now all of you have understood. Such simple is the provision. Assessable value is 15,000. Got it? This becomes expense incidental to supply. ये बन जाता है expense incidental to supply. And आपको पता है कि incidental expenses should be included. Very good. सोनिया जी, संदीप जी, चांदनी जी, रुचा जी, शिवानी जी. वेरी गुड. नहीं, कुछ भी हुआ ना भार्गव, वॉट एवर इज द केस, एसेसेबल वैल्यू इज 15,000 इन दिस केस. ओके, अब ये सब समझ में आने के बाद आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल द प्रोविजन ऑफ प्योर एजेंट. ओके, अब क्या हुआ, यहां पे 10,000 एक्सक्लूड हुए. एक केस में 10,000 एक्सक्लूड हुए. क्यों एक्सक्लूड हुए ये 10,000 रुपए? क्यों एक्सक्लूड हुए? बिकॉज दे वर रिकवर्ड एज प्योर एजेंट. दे वर रिकवर्ड एज प्योर एजेंट. डिड यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई दे वर एक्सक्लूडेड. एग्जैक्टली यही दिया गया है आपको रूल 33 में. एग्जैक्टली दिस इज गिवन टू यू इन रूल 33. अब रूल 33 के ऊपर बेस्ड एक सवाल देखते हैं. विल सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूल 33 एंड जैसे ही सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें इसके डिटेल में वर्डिंग भी देख लेंगे. ओके, तो हर एक सवाल ऐसा कवर किया है जिससे आपको प्रोविजन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. गॉट इट गाइस? सिर्फ प्रोविजन बताऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा डिटेल में जाके आपको यस एक सम के साथ प्रोविजन बताइए. तो यू प्लीज नाउ गो टू योर हिंट्स पार्ट. उसमें क्वेश्चन दिया आपको. जो हिंट्स पार्ट का नोट्स है ना आपका, गो टू दैट ऑन पेज नंबर 15. क्वेश्चन ये है, पे अटेंशन. रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड registered in Mumbai is manufacturer of footwear. It imports footwear making machine from US. Rolly Poly manufacturers wants to avail services of Rudra Logistics, a licensed customs broker with its office at Ahmedabad. In meeting all legal formalities for getting the machine cleared from customs station, Rolly Poly Manufacturers authorizes Rudra Logistics to incur on its behalf expenses in relation to clearance of imported machine from customs station and bringing the same to the warehouse at Mumbai. समझ में आ गया? Recipient of supply is Rolly Poly Manufacturers Limited and supplier is Rudra Logistics. Okay, these expenses would be reimbursed by Rolly Poly Manufacturers Limited to Rudra Logistics on actual basis. Okay, जो expenses Rolly Poly के behalf पे होंगे, whatever expenses will be done on behalf of Rolly Poly Manufacturers Limited, they will be reimbursed by them to Rudra Logistics. वो reimburse हो जाएंगे Rudra Logistics को. In addition, Rolly Poly Manufacturers Limited will also pay agency charges to Rudra Logistics for services rendered by it. Rudra Logistics, finally, the supplier has raised an invoice as follows. तो इस इनवॉइस को देख के आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस इनवॉइस यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई.
So can we observe the invoice? Guys, can we observe the invoice? Yes or no? चलो ऑब्जर्व करते इनवॉइस. एजेंसी चार्जेस क्या होना चाहिए विथ एजेंसी चार्जेस? इंक्लूड और एक्सक्लूड, इतना ही मुझे बोलो आप. एजेंसी चार्जेस शुड बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? ऑब्वियसली ये होंगे इंक्लूड. इट्स अ वैल्यू फॉर द ओन सर्विस गिवन बाय रुद्र लॉजिस्टिक्स, इजंट इट? तो ये तो होगा इंक्लूड. नाउ unloading of machine at Kandla Port, Gujarat. Charges for transport of machine from Kandla Port to Rudra Logistics Godown in Ahmedabad. Charges for transport of machine from Rudra Logistics Ahmedabad Godown to the warehouse of Rolly Export Import House in Mumbai. And customs duty of machine, dock dues, पोर्ट चार्जेस. तो अब ये जो है ना सब कुछ फ्रॉम 2 to 7, ये जो है ना फ्रॉम 2 to व्हाट 7, ये सब कुछ हो जाएगा एक्सक्लूड. ये सब अमाउंट पे किया है, ये सब अमाउंट पे किया है सप्लायर ने as it is for the recipient of supply. ये सब अमाउंट्स रीएम्बर्स हो जाएंगे. ओके, बट ये एजेंसी सर्विसेज देने के लिए, फॉर गिविंग दीज एजेंसी सर्विसेज, होटल एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये इनकर करना मैंडेटरी था. It was compulsory, Sandeep ji. It is incidental, Bhargav ji. It is incidental for giving agency services to incur the expenses of hotel, traveling, and telephone. So these three will be included. So please add them and tell me what is your accessible value. What is your accessible value? These three are totally incidental to supply. They are incidental to supply. मतलब क्या? They are incurred by supplier for giving the service, for giving the decided service, that is of agency. So please add in 5 lakhs, 45,000, 50,000 and 2,000 and let me know guys what is your accessible value. Yes, what is your accessible value? Is it 5,97,000? Check. Your accessible value will be finally 5,97,000. Very good, very good. ये question दोस्तों, this question was asked for 8 to 10 marks in the exam. 8 to 10 marks in the exam. Got it? You, why so much weightage? You have to explain them. Why? First of all, you can say that the Rudra Logistics is acting as pure agent of Rolly Poly. That is first thing you have to explain them. तो मैं आपके लिए ये पढ़ता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, चेक वेदर यू अंडरस्टैंड इट. ओके, बहुत लॉजिकल है. एज पर एक्सप्लेनेशन टू रूल 33, अ प्योर एजेंट मीन्स, कौन होता है प्योर एजेंट? तो आप देखो इस प्योर एजेंट के डेफिनेशन में रुद्र लॉजिस्टिक्स आता है कि नहीं? A person who enters into contractual agreement with recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or cost in the course of supply of goods or services or both. Okay.
neither intends nor holds any title to the goods or services. ये सब जो सर्विसेज आप देख रहे हो ना यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 to 7 में जो भी देख रहे हो ना ये सब किसके नाम पे हुआ है? ये सब ऑब्वियसली रुद्र लॉजिस्टिक्स ने रॉली पॉली के नाम पे ही किया है. सो neither intends to nor holds any title to the goods or services or both so procured, got it, or supplied as pure agent of recipient of supply, does not use for his own interest such goods or services, and receives only the actual amount incurred. जो एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड की थी ना 2 to 7 पॉइंट में, उतनी ही अमाउंट रिसीव की है, रीएम्बर्स हुई है उसको. ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम उस सप्लायर को बोल सकते हैं प्योर एजेंट. ओके, इन गिवन केस Rudra Logistics has been authorized by recipient of supply, Rolly Poly Manufacturers Limited, to incur on its behalf the expenses incurred in relation to clearance of imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse of recipient. That is expenses mentioned in the point number 2 to 7. Further, Rudra Logistics does not hold any title to the said services and does not use them on his own interest or for his own interest. Lastly, Rudra Logistics receives only the actual amount incurred to procure such services, of course, in addition to agency charges. Thus, Rudra Logistics qualifies as a pure agent. जब वो क्वालिफाई होता है एज अ प्योर एजेंट, तो आपको क्या करना है? जो भी अमाउंट रिसीव हुई है एज अ प्योर एजेंट, वो अमाउंट इंक्लूड नहीं करनी है. ओके, फर्दर रूल 33 stipulates that notwithstanding anything contained in provisions of chapter 4, if all following conditions are satisfied, सपोज ये फॉलोइंग जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गए, ओके, तो क्या करना चाहिए? The supplier acts as pure agent when he makes supply to the third party. The payment made by pure agent on behalf of recipient of supply has been separately indicated. Okay, isn't it separately indicated? Right now it is separately indicated in the invoice issued, and the supply is procured by pure agent from third party as pure agent of recipient of supply are in addition to the services supplies on his own account. ये सब कुछ हुआ तो क्या होगा? Since condition 1 to 3 mentioned are satisfied, expenses 2 to 7 को क्या करना चाहिए? एक्सक्लूड करना चाहिए फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा? सिर्फ आएगा 5 लाख प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. जो 2 to 7 में इंकर किया है वो हो जाएगा निगलेक्ट. इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? यस, नो? If yes, then Vishal ji, then let's go ahead. सवाल पूछा है, और एक सवाल पूछा है, वुड द आंसर बी डिफरेंट? क्या आंसर में डिफरेंस आएगा इफ रुद्र लॉजिस्टिक्स चार्जेस 13 लाख एज लमसम? रुद्र लॉजिस्टिक्स ने क्या किया, यहां पे बाइफर्केशन नहीं दिखाया, बट 13 लाख लमसम चार्ज किए.
13 लाख लमसम चार्ज किए फॉर क्लियरिंग द गुड्स, तो क्या होगा? फॉर क्लियरिंग द इंपोर्टेड मशीन। वेरी गुड चांदनी जी। अब सवाल यह है कि इफ रुद्र लॉजिस्टिक्स charges directly 13 lakh rupees, then what will happen? बाइफर्केशन दिखाए नहीं, डायरेक्टली 13 लाख रुपीस चार्ज किए, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा एसेसेबल वैल्यू का 13 लैक्स डायरेक्टली। 13 लाख डायरेक्टली आंसर होगा, कोई स्कोप ही नहीं है, एक्सक्लूजन का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इनवॉइस में बाइफर्केशन दिखाया ही नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर होगा 13 लाख रुपीस। तो देख लो सॉल्यूशन। इफ रुद्र लॉजिस्टिक्स चार्जेस 13 lakh as lump sum consideration for getting the imported machine cleared from custom station and bringing the same to the warehouse of Rolly Poly Manufacturers Limited, Rudra Logistics would incur expense 2 to 7 for its own interest, as agreement requires it to get imported machine cleared from custom station and bring the same to the Rolly Poly Manufacturers Limited warehouse. Rudra Logistics would not be considered as pure agent. And क्या होना चाहिए then? Assessable value, as we discussed, will be full 13 lakh rupees. Is it clear to all of you? Yes or no, guys? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये सब इंस्टीट्यूट्स का. This is a very favorite question of all institutes, and they many of the time ask this question without changing the figures. ये खासियत है, they ask this question without changing the figures. So is it clear, guys? Yes or no? इतना ही बोलना है आपको, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा आपको, इतना ही पूछा है क्या ये रूल नंबर 33 के प्रोविजंस क्लियर हो गए आपको? संदीप जी वेरी गुड, थैंक यू. चलो गाइस, अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? ओके चलो आगे बढ़ते गाइस. सो आफ्टर 33 लेट्स गो टू 34. क्या है रूल 34? बहुत ही आसान है. रूल 34 मतलब देखो क्या होता है, बहुत केसेस में क्या होता है, यू इंपोर्ट अ सर्विस और यू इंपोर्ट गुड्स और यू एक्सपोर्ट अ सर्विस और यू एक्सपोर्ट गुड्स, इजंट इट? तो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए या आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की, तो ऑब्वियसली इंडिया में जीएसटी आएगा, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया. बट जो वैल्यूएशन होता है ना, वो फॉरेन करेंसी में होता है. यस और नो? वैल्यूएशन फॉरेन करेंसी में होता है. तो बेसिकली क्या है रूल 34? सपोज वैल्यूएशन फॉरेन करेंसी में होता है, तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे इंडियन रुपीज में? सो रूल नंबर 34 टॉक्स अबाउट conversion of foreign currency in Indian rupees for sake of valuation. समझ में आया क्या है 34? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू. रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना चाहिए? फॉर फॉरेन करेंसी
किसके लिए? फॉर व्हाट? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। समझ में आया सबको? क्या है ये रूल, किसके बारे में बात करता है? यस और नो गाइस? यस। सो 34 गुड्स के बारे में क्या बोलता है एंड 34 सर्विसेज के बारे में क्या बोलता है? देखो एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आपने नेटफ्लिक्स का ऐप, आपने क्या किया? नेटफ्लिक्स, आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया। आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया मतलब कौन से करेंसी में आपको डेबिट पड़ा है? एक्चुअली आपको डेबिट हुआ है इन फॉरेन करेंसी, बट जीएसटी इंडिया में लगेगा ना, तो उसके लिए कैसे होगा कन्वर्जन? दैट इज द पॉइंट। या फिर जूम, जूम की सर्विसेज में यूज करता हूं, पेड सर्विसेज। तो जूम इंक ने मुझे इनवॉइस भेजा है, वो इनवॉइस फॉरेन करेंसी में भेजा है, बट उसके ऊपर जीएसटी इंडिया में पे करना है ना, रुपीस में। तो वो फॉरेन करेंसी रुपीस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो हाउ टू कन्वर्ट इट, ये डिस्कस किया है रूल 34 ने। ओके, तो इन केस ऑफ सर्विसेज व्हाट यू हैव टू डू, सर्विसेज के केस में आपको लेना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। So rate of exchange is according to generally accepted accounting policies. And in goods, it is determined, as per Customs Act. It is determined as per Customs Act. It is determined as per Customs Act. Did you all understand, guys? कैसे होगा conversion? So check. The rate of exchange for determination of value of taxable goods shall be applicable rate of exchange as notified by board. Board means Central Board of Indirect Taxes and Customs under section 14 of Customs Act for the date of time of supply of such goods in terms of section 12 of the Act. And rate of exchange for determination of value of taxable services shall be the applicable rate of exchange determined as per GAAP, generally accepted accounting principles. सही है? Got it? Shall we go ahead to rule 35? So 34 का I'm expecting at the most a 2 to 3 mark small question, nothing more than that. तो यहां पे सब कुछ कंसाइज हो गया। चलो, shall we go ahead guys, all of you? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देख लो 35, बहुत ही सिंपल है रूल 35। एक्चुअली ऑलरेडी हमने 35 डिस्कस किया है। कब किया है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोलता है? accessible value will include any taxes other than GST. yes or no? तो जीएसटी को क्या करना होता है? जीएसटी को करना होता है एक्सक्लूड, isn't it? तो रूल 35 क्या बोलता है? रूल 35 बोलता है हाउ टू फाइंड द वैल्यू इफ द गिवन वैल्यू इज इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब 1,18,000 इज इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो बोलता है, तो रूल 35 बोलता है टेक 1,18,000 एज 118
take 1,18,000 as 180. So what will be 100? Simple, which we already know. 1,18,000 into 100 by 118. Did you all understand? Rule 35, what it says. So whenever next time you are excluding GST, you please mention that we are excluding GST using computation given in Rule 35. Is it clear? So in short, exclude GST. Why exclude? Because of section 15, subsection 2, clause A, read with Rule 35 of CGST rules. Is it clear, guys? I want yes or no from you in the chat window. yes या नो बोलना इतना मुश्किल नहीं है. Tell me, guys, is the point clear to all of you? चलो लेट्स गो अहेड. एक बार एज अ फॉर्मेलिटी देख लेते हैं विशाल विक्रम जी. $35 value of supply inclusive of integrated tax, central tax, state tax, union territory tax, means any GST. So where the value of supply is inclusive of these taxes, okay, the tax amount shall be determined in following manner. तो ऑब्वियसली आप टैक्स अमाउंट भी निकाल सकते हो, आप वैल्यू भी निकाल सकते हो. करेक्ट. चलो, so this completes, guys, your section 15. Read with rule number 27 to 35. Is it clear, all of you? Aman ji, no problem. Aman, no problem. You can watch recording for the first 1 hour that we discussed. मैं आपको एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. I want to ask you one question out of the way. Can I ask you? क्या मैं आपको एक आउट ऑफ द वे सवाल पूछ सकता हूं? ऑफ कोर्स वैल्यूएशन का ही है. वैल्यूएशन का ही है. पूछ सकता हूं क्या? ओके, चलो समझ लो, प्लीज अंडरस्टैंड. सो वन बोनस क्वेश्चन फॉर यू ऑन वैल्यूएशन. एग्जाम में आ जाएगा. वन बोनस क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन. ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? ऐसा कुछ इंट्यूटिव होता है बैच में कि हाँ पूछ लो स्टूडेंट से एंड वही आ जाता है एग्जाम में. चलो, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? देखो कैल्सी लेके बैठे हो. आई होप आप कैल्सी लेके बैठे हो. रुपीज, 1 मिनट का सवाल है. ₹2,16,000 is received. ₹2,16,000 is received by a professional. ₹2,16,000 is received by a professional, including GST at 18%. The amount is received after TDS. The amount is received after TDS at the rate of 10%. That's it. ये सवाल है आपका. 1 मिनट का सवाल था.
compute assessable value. Compute assessable value. Can you compute assessable value? बस इतना ही सवाल है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। एक बार ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या होगा एसेसेबल वैल्यू? यहां पे कैसे डिटरमाइन होगा एसेसेबल वैल्यू? तो गाइस गाइस क्या होगा इस केस में? मजा आने वाला है आपको। किसी को आंसर मिल गया तो मुझे बोल दो। जब जब अंडरस्टैंड से वैल्यू, एज्यूम करो, एज्यूम वैल्यू इज इक्वल टू 100, से वैल्यू इज 100, तो जीएसटी आएगा 18, बिकॉज जीएसटी इज 18%। सो क्या इनवॉइस वैल्यू बन गया? कितना बन गया इनवॉइस वैल्यू? 118 बन गया। यस और नो? इनवॉइस वैल्यू 118 बन गया, बट लेस टीडीएस आ गया। टीडीएस मैंने बोला है 10% पे है, तो टीडीएस एट 10% हुआ, बट टीडीएस एट 10% हुआ ऑन ऑन वैल्यू, ऑन वैल्यू मतलब ऑन 100 एंड नॉट 118। तो टीडीएस कितना हुआ? टीडीएस हुआ 10, तो अब आ गया 108 एज नेट अमाउंट रिसीव्ड। इज इट क्लियर? जब 100 रुपए वैल्यू है, जब 100 रुपए वैल्यू है और 18% जीएसटी है और 10% टीडीएस है, तो नेट अमाउंट रिसीव होती है 108। क्या यहां तक क्लियर हुआ है सबको? नेट अमाउंट इज 108। अब नीति जी हुआ ये है, नीति जी हुआ ये है कि अब मिला है, यहां पे मिला है 2,16,000। जो 2,16,000 यहां पे मिला है ना, दैट 2,16,000 इज इक्वल टू 108। तो 100 कितना? यस, तो 100 कितना मतलब वैल्यू कितना? तो 2,16,000 into 100 by 108. Tell me, assessable value is 2 lakh. क्या सबको समझ में आया? कैन यू प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट? ये मुझे लग रहा है इस टाइम एग्जाम में पूछेंगे। दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट्स व्हाट आई फील, एंड मेनी टाइम्स दिस फीलिंग क्लिक्स। ये फीलिंग क्लिक हो जाती है, एंड देन स्टूडेंट्स तो क्या भांगड़ा करके आते हैं, नाचते नाचते एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं। इट डजेंट मीन आपको बाकी पढ़ना नहीं है, बाकी भी पढ़ना है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हर एक टॉपिक में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा जो मुझे लगता है, एंड क्या पता उसमें से 25-30 मार्क्स का आ जाए, तो आपकी चांदी चांदी हो जाएगी, राइट? इसको क्रॉस चेक करेंगे। सो वी आर नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एजुकेशन पार्ट एंड लर्निंग पार्ट, बट ऐसे जो आउट ऑफ इंट्यूशन लगता है वो तो बताते जाऊंगा ना आपको। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या? यस, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्रॉस चेक? एसेसेबल वैल्यू 2 लाख, तो उसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए 36,000, 18% है ना, तो 2,36,000 will be invoice value। सही है ना? लेस टीडीएस, टीडीएस हुआ होगा 20,000, बिकॉज वो हुआ है एट 10% ऑफ 2 लाख। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड इज 2,16,000। सही है?
net amount received 2,16,000. Is it clear guys to all of you? Yes or no? आज सैटरडे इवनिंग है तो बहुत लोगों ने क्लास बंक किया है. अब ऐसा भी नहीं बोल सकते बंक किया है क्योंकि शायद वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट यहाँ पे लाइव में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, विच इज नॉट गुड. लाइव तो लाइव होता है भाई, देखना ही चाहिए लाइव. जब फैकल्टी लाइव आ सकता है तो स्टूडेंट्स को क्या है. यस, 2,16,000 इज नेट अमाउंट रिसीव्ड. इज इट क्लियर? ऑसम. अच्छा लगा? माय प्लेजर. वंडरफुल वंडरफुल. अभी तक टिल नाउ इफ यू हैव नॉट टेकन द क्लास, it's my genuine request, go ahead and take the class. होल क्लास नहीं लिया है मतलब, मैं क्या बोलूँ आपको, क्लास नहीं लिया है मतलब अभी तक आपने इस बैच में एडमिशन नहीं लिया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. इस बैच की फी क्या है एक बार बोल दो कमेंट बॉक्स में. व्हाट इज द फी फॉर दिस बैच? वंस यू टेल मी इन द कमेंट व्हाट इज द फी फॉर दिस बैच. जिसने एडमिशन लिया है बोल दो फी कितनी है इस बैच की. यूजुअली मैं फी एंड ऑल डिस्कस नहीं करता क्लास में, बट मुझे जस्ट आपको एक पॉइंट प्रूव करना है, इसलिए आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द फी फॉर दिस एंटायर जीएसटी, दिस एंटायर बैच? बोलो फटाफट जिन्होंने एडमिशन लिया है. 999. मतलब चलो 1,000 पकड़ लो, 999. So guys, is it a big amount? And इस 999 फीस में आपको और क्या चाहिए. मतलब यू आर गेटिंग सच अ क्वालिटी एजुकेशन एट दिस प्राइस, सो यू शुड नो. एंड ये क्या है पता है, कमिटमेंट फीस है. दीज आर द कमिटमेंट फीस. जब आप 999 पे करोगे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग द क्लास. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फी ली गई है 999. यू विल फील द बिलोंगिंगनेस कि हाँ हमने क्लास लगाया है तो अटेंड करना चाहिए, तो ऐप में देखना चाहिए. यस और नो? यस, मंडे से क्लास होगा ऐप में. अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो बहुत सिंपल है एडमिशन लेना. गो टू www.meplclasses.com, गो टू द कोर्सेस में आप जाके एडमिशन ले सकते हो. राइट, go to the courses, the relevant course, and go ahead and take the admission. You will find a fast track batch, yes, which will go on till 12th of May. मतलब लगभग एक महीना, फुल 30 days ये बैच चलेगी. मतलब स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट 40 घंटे का क्वालिटी एजुकेशन. एंड गाइस 40 घंटे का क्वालिटी एजुकेशन एट 999 आई थिंक इज, मतलब 999 तो कुछ नहीं है फॉर दिस क्वालिटी एजुकेशन. एंड दैट्स व्हाट वी एट MEPL ऑलवेज बिलीव. एंड आप उसका नतीजा देख सकते हो. इतने रैंकर्स आ गए दोस्तों लास्ट कुछ ईयर्स में, एंड लास्ट कुछ टर्म से तो ऑल इंडिया रैंक 1 इज फ्रॉम MEPL. देख सकते हो आप. तो आपका नाम इस लिस्ट में आना ही चाहिए. दैट्स व्हाट आवर एफर्ट्स आर. यस, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड. मंडे मतलब कब? मंडे मतलब ऑन 17th of April. क्या डेट बोली? क्या डेट बोली एक बार डालो. क्या डेट बोली एक बार आप डालो कमेंट बॉक्स में. 17th April मंडे we have marathon batch of direct taxes. डायरेक्ट टैक्सेस की मैराथन बैच है जो सबने अटेंड करनी चाहिए. मेरे हिसाब से सबने अटेंड करनी चाहिए इस डायरेक्ट टैक्स की मैराथन बैच, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. कहाँ पे है वो मैराथन बैच? MEPL क्लासेस के CA एक्सक्लूसिव
एंड CMA एक्सक्लूसिव चैनल पे। कब है? 17th अप्रैल at 10 o'clock, from 10 o'clock in which channels? In which channels? MEPL CMA exclusive channel and MEPL CA exclusive channel. Kindly attend, guys. Kindly attend this batch. Why? Why should I attend this batch? Because obviously आपको जो डायरेक्ट टैक्स है आपके फाइनल लेवल पे, उसमें उसका फायदा हो जाएगा, उसमें आपको उसका फायदा हो जाएगा। तो प्लीज अटेंड फ्रॉम 10 o'clock टिल व्हाट टाइम? फॉर 8 to 9 hours। 8 से 9 घंटे में आपका फुल डायरेक्ट टैक्स कवर हो जाएगा। सो हु ऑल आर गोइंग टू अटेंड? फटाफट मुझे बोल दो, हु ऑल आर गोइंग टू अटेंड दैट बैच? क्विकली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। चलो गाइस आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। CMA एक्सक्लूसिव चैनल पे, MEPL CMA एक्सक्लूसिव चैनल, so you can go ahead and subscribe that channel, MEPL CMA exclusive. I think you already subscribed it. चलो आगे बढ़ते, let's move ahead and let's discuss 31A. What is 31A? Yes, Niti, welcome to attend. Sushma, come on, welcome. You're welcome to attend the batch. Mobani, welcome to attend the batch. Chandni, welcome to attend the batch. Attend full 8-10 hours. You will get a lot of knowledge. I'm quite sure it will be very helpful. Chalo guys, let's go ahead. Let's go ahead. Where I am now, I want to read one rule which is 31A. 31A पढ़ना है मुझे. I have to read 31A. What is 31A? Yes, संदीप जी, you're welcome to attend the batch. मैं बहुत खुश हूँगा अगर आप एंटायर बैच अटेंड किया ना अपने लाइफ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। चलो 31A आपको समझाना है क्या है ये। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप एक काम करोगे बाद में, ये रूल आपके नोटबुक में लिखोगे, ओके? क्योंकि ये दोनों में से किसी भी नोट्स में नहीं है, तो आपके नोटबुक में आप ये रूल लिखोगे, ओके? स्लोली स्टेडीली वीडियो को अच्छे से पॉज करके आप ये नोटबुक में लिखोगे। डू यू प्रॉमिस मी दैट यू विल राइट दिस इन ए नोटबुक? अब समझ लो क्या है, ये एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सब आपके नोट्स में है, ये एक पॉइंट आपके नोट्स में नहीं है, ओके? रूल 31A, which is value of supply in case of lottery, value of supply in case of lottery, betting, gambling, horse racing. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है ना, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, दिस ऑल इज इक्वल टू सप्लाई, दिस ऑल इज इक्वल टू सप्लाई। एक्चुअली ये सब है ना, यस संदीप जी, all these notes will be given in the app, all these notes are given in the app, okay, for those who have subscribed to the batch. So yes, notes are there. Only thing is 31A I am asking you to write in the notebook, okay? Chalo, so what I am telling you is this all things is supply. Why it is supply? Because first of all ये actionable claim है। Actually actionable claim is not a supply, but lottery, betting, gambling, horse racing is exception to that. In short, lottery, betting, gambling, horse racing is supply. ये supply है। अब उस supply की value निकालनी पड़ेगी। We'll have to find value of that supply. Agreed? So what is the value of supply?
of lottery, it shall be deemed to be 100 by 128, okay, of face value of ticket or price as notified in official gazette by organizing state, whichever is higher. Okay, suppose, मतलब उनका बोलना क्या है, उनका बोलना ये है जो भी फेस वैल्यू ऑफ टिकट है या प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट जो है, जो नोटिफाइड प्राइस है या फेस वैल्यू है, विच एवर इज क्या हाइयर, वो आपको पिकअप करना है. यू हैव टू पिकअप विच एवर इज हाइयर. एंड आपको क्या करना है, वो हाइयर पिकअप करके आपको वो जो हाइयर है ना, दैट हाइयर यू हैव टू डीम एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट 28%. मतलब 200 and 175. 200 here is face value. 175 is price notified. Pick up, whichever is higher. So higher is 200. Do you agree? Higher is 200. Yes. Pick up that 200. And what you will do now? That 200 you will take as equal to 128. So 100 value is how much? ये logic है. This is the logic. So do 200 into 100 by 128. Is the logic clear to all of you? Yes or no? फटाफट guys chat window में बोलो, is the logic clear to all of you? Yes? No? What are the timings of the batch in the app? Same timings, 9 to 10:30. Rahul, same timings, 9 to 10:30. Is it clear to all of you? Yes or no? Yes or no? Is the yes? Very good, very good. So here I have explained you that why it is happening this way. Okay, so I'm showing you everything at one glance, so that what happens, you can pause the video afterwards and complete it. Okay, so rule 31A you can complete in your notebook. You can pause at this screen, complete the heading. You can pause at this screen, complete the rule. Okay, you want me to explain again? No problem. I will explain again. What you have to do, Sandeep ji, you have to take the face value of the lottery ticket. Yes, one, face value of the lottery ticket. Second, there will be a price notified by the state government for that. Now, out of this two, you have to pick up whichever is higher. Okay, because many times, just to escape the value, a lower face value will be declared. So government says on a safe side, you pick up face value or government notified value, whichever is higher. Okay, so like in our example, we have picked up 200 or 175, whichever is higher. Now we have picked up 200 being higher. Now you have to assume that 200 is including GST of 28. So that 200 will now be equal to 100 plus 28. That is 128. That 200 will be equal to 128. So value of 100 will be how much? So that will be found out by doing cross multiplication. Is it clear to you now? Is it clear to you now? Yes. So क्या बोला है? What have I said? That value of supply shall be deemed to be 100 by 128.
of what? Of face value of ticket or price as notified, whichever is higher. So here is the rule, and what I told you in simplified form is pick up whichever is 100, pick up whichever is higher, multiply by 100 divided by 128. And I have told you logic also. Very good, very good. Let's go ahead. For betting, gambling, horse racing, value of supply of actionable claim in form of chance to win in the betting, gambling or horse racing shall be 100% of face value of the bet or the amount paid into the totally setter. Okay, means the bet is of how much amount that matters here, and that will be the value. So 100% of the face value of the bet, that will be your assessable value. Okay, so this way we can do topic of valuation. I hope guys the overall topic of valuation is clear to all of you. The name of this thumbnail for the YouTube video given was time of supply, but we have consumed a lot of time in valuation itself. So basically, none of your doubts will be left unsolved and every concept will be made clear whatever time it takes. It's important to do this class in this fashion so that everyone understands. Yes or no? Did you understand, guys? All these things. Shall we go ahead to topic of time of supply? Shall we continue for next half an hour so that what happens in next class our burden is reduced and in the end we complete syllabus in time? Totally setter is the pool of funds. Pool of funds. Okay. Chalo guys. Chalo. Yes sir. Let's go ahead. Are you all ready to sit for next half an hour for doing time of supply? So, in time of supply, which sections matter? So guys, once we have done valuation, that means we have covered strong 10 to 15 marks of your syllabus. Yes. Time of supply. Section 12, section 13, section 14. 12 is time of supply of goods, 13 is time of supply of services, and 14 is time of supply when there is change in rate of GST. Correct? Now, point is 12 and 13 have 6 subsections. Once tell me in the comment box how many subsections are there in both 12 and 13. In 12 and 13 there are 6 subsections, in which one is introduction, 2 is time of supply forward charge mechanism, 3 is time of supply reverse charge mechanism, 4 vouchers, 5 residuary, and 6 additional consideration by way of interest, late fees, penalty. Okay, so why I have written them commonly? So that you easily remember it. You easily remember it. आपको easily आपको याद रहे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई जानना है सर्विसेज का. I want to know time of supply of services in reverse charge mechanism. So I should go to which section, subsection? So I will think like this: services. Services means section 13. And
reverse charge mechanism means subsection 3. So it will be 13(3). समझ में आया? Suppose forward charge mechanism in case of goods. Forward charge mechanism in case of goods. तो गुड्स के लिए कौन सा सेक्शन है? 12. एंड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए कौन सा सबसेक्शन है? 2. So I will go to 12(2). Are you getting it? How to remember section, subsection? Yes or no? How to remember section, subsection in case of TOS? Yes, wonderful, wonderful. Good answers. Niti and Anisha, good answers. Very good answers. Suppose voucher में time of supply जानना है तो you will go to subsection 4. Goods के लिए voucher है तो 12(4). Services के लिए vouchers है तो 13(4). Clear? Very good, very good. चलो, so जानते हैं गुड्स के लिए क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 12 सबसेक्शन 2. सबसे सिंपल है गाइस. क्या होता है? इट इज द डेट व्हेन इनवॉइस इज इशूड. डेट व्हेन इनवॉइस इज इशूड or the last date मतलब due date when such invoice should have been issued, or the last date when such invoice should have been issued, whichever is earlier. Yes, whichever is earlier. समझ में आया सबको? Yes. अब देखो, इतना सिंपल है. इसमें पेमेंट कब आया है देखना नहीं है. सप्लायर को क्या देखना है? उसने इनवॉइस कब इश्यू किया है, या लास्ट डेट जब इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था. करेक्ट. अब सवाल ये आता है कि इनवॉइस इश्यू करने की मतलब आइडियल डेट क्या है? तो जहां पे where there is a supply, where there is a involvement of movement of goods, जो कि होगा मैक्सिमम केसेस में, तो when the invoice should be issued before or at the time of removal of goods. Before or at the time of removal of goods. ओके. मतलब ये गोडाउन है आपका, ये मेरा गोडाउन है. इस गोडाउन से गुड्स मैंने भेजे. आई सेंट द गुड्स फ्रॉम दिस गोडाउन ऑन से 10th May. So that is the last date when invoice should have been made. सबको समझ में आया? Did you all understand? And जहां पे supply does not involve movement of goods, जहां पे supply does not involve movement of goods, उस केस में yes, उस केस में कब इनवॉइस निकालना चाहिए? Before or at the time of making such goods available to the recipient. When you are making the goods available to the recipient. ये सबसे 2 कॉमन केसेस है, उसमें से भी ज्यादा कॉमन एक केस है. गॉट इट गाइस? सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन देख लेते इसका. एक क्वेश्चन देख लेते गाइस. गो टू क्वेश्चंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस पे चले जाओ इन टीओएस एंड वीओएस पीडीएफ. इन पीडीएफ नंबर 1 टीओएस एंड वीओएस, go to the time of supply questions. In that, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से देख लो दोस्तों. चेक क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्ली. के
मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन्स. तो मशीन्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स. हैविंग टर्नओवर डजंट मैटर. टर्नओवर क्या है, क्योंकि हमें पता है एंड में क्वेश्चन है कि व्हाट्स द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड हमें पता है गुड्स है, तो ये सब मैटर नहीं करता. रिसीव्ड एडवांस ये भी मैटर नहीं करता है. अलॉन्ग विथ परचेस ऑर्डर ऑन, परचेस ऑर्डर की डेट भी मैटर नहीं करती है. तो आपने सपोज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हटा दी क्वेश्चन में से, तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है. एंड कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटा देना. ओके, तो उसके लिए क्या है सीक्वेंस, आपको फर्स्ट देखना है कि अल्टीमेटली पूछा क्या है. अभी तो हमें पता है कि वी आर फाइंडिंग टाइम ऑफ सप्लाई, बट एग्जाम में रैंडमली ये क्वेश्चन आएगा, तो पहले आप प्लीज एंड वाला सवाल देख लो, उस एंगल से पढ़ो, उस एंगल से आप अब फैक्ट्स पढ़ो. ये सिर्फ टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. पॉइंट समझ में आया सबको? ओके. फॉर सप्लाई ऑफ मशीन एक्स फॉर 20 lakhs, वैल्यू भी इरेलेवेंट है. टू बी मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, इरेलेवेंट है. एडवांस पेमेंट वाज एंटर्ड इन द बुक्स, इरेलेवेंट है. credited in the bank account, irrelevant है. Machine is manufactured and after approval has been delivered on 25th October 2020. First relevant point आ गया. Invoice was raised at the time of removal. बैलेंस पेमेंट कब मिला है, irrelevant है. सब कुछ irrelevant है. रिकॉर्ड कब किया बुक्स में, irrelevant है. बैंक में क्रेडिट कब हुआ, irrelevant है. तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिस केस. यस फ्रेंड्स, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिस केस, बोलो फटाफट. So obviously guys, time of supply in this case is 25th October 2020. Do you agree with me? Yes or no? बाकी कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है. It is 25th October 2020. देख लो, क्या इसके भी हिंट्स दिए सर? ऑब्वियसली यस, हिंट्स सबके है आपके पास. यस, देख लो, एकदम अच्छे से आपको सॉल्यूशन लिख के दिया है. 25th October 2020 इज द आंसर, so you can go through it. ओके. आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि सर शेड्यूल जो आपने दिया है, शेड्यूल जो आपने दिया है, उस शेड्यूल में अभी क्या होगा? आज तो टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होना चाहिए था, आज खत्म नहीं होगा. नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट सेशन में खत्म होगा, बट शेड्यूल वैसे ही फॉलो होगा. मतलब सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड विल बी सेम. समझ में आया? जिस सीक्वेंस पे टॉपिक्स कवर होंगे वो सेम रहेगा. मतलब किसी को पहले से पढ़ के आना है, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई के बाद जो टॉपिक लेने वाले हैं वो ऑब्वियसली ट्यूसडे को चला जाएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड फिर आपको सवाल होगा कि सर तो फिर टाइम में कैसे खत्म होगा सिलेबस? दोस्तों होगा टाइम में खत्म, क्योंकि हम वो टाइम मेकअप करेंगे. मेकअप करेंगे मतलब वी विल मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. ओके, कैसे? एक आध सेशन में कभी एक्स्ट्रा ले सकता हूं, राइट? एक आध सेशन कभी एक्स्ट्रा ले सकता हूं मैं, बट जिस डेट पे बैच खत्म होनी है उसी डेट पे खत्म होगी. वो एंड डेट आगे नहीं जाएगी. दैट इज माय गारंटी. समझ में सबको बात? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द थिंग गाइस? योर सक्सेस इज पर्सनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर सक्सेस इज MEPL's रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूँ. We have done that for last so many years and we will do it with you also. Your success is our response. चलो, shall we go to second question? Second question मतलब next provision. Last provision for today, section 13 subsection 2. Last provision for today, section 13 subsection 2. ओके, क्या है, क्या है ये? ऑब्वियसली सर्विसेज के लिए 13 मतलब सर्विसेज एंड सबसेक्शन 2 मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. यस, तो पहले एफसीएम देख रहे फुल, पहले फुल एफसीएम देख रहे, तो पहले देखा 12/2, अब देख रहे 13/2. तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि जो इनवॉइस है ना वो टाइम में बनाया गया है. यू हैव इशूड इनवॉइस विद इन टाइम. टाइम लिमिट क्या था? टाइम लिमिट था विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. आपने टाइम में इनवॉइस बनाया है, इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी इज इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम. समझ में दोनों पॉसिबिलिटीज? गवर्नमेंट आपके साथ खुश कब होगी? When will government be happy with you guys? You are a service provider, chartered accountant, company secretary, CMA, lawyer, कोई भी हो सकते हो आप. डॉक्टर, डॉक्टर्स को तो खैर हेल्थ केयर सर्विसेज पे जीएसटी है ही नहीं. आर्किटेक्ट, कोई भी हो आप, आपने टाइम में इनवॉइस निकाला है तो गवर्नमेंट विल बी हैप्पी विथ यू. यस और नो? यस और नो? आपने टाइम में इनवॉइस बनाया है तो गवर्नमेंट विल बी हैप्पी विथ यू. तो इन दैट केस गवर्नमेंट सेज टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. कब आपने इनवॉइस इशू किया है वो डेट को ही हम इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि आपने टाइम में इनवॉइस इशू किया है. सिंस यू हैव इशूड इनवॉइस इन टाइम, the time of supply will be date of issue of invoice. क्या है पॉइंट? क्लियर है सबको? गाइस, इज दिस द पॉइंट? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इनवॉइस को टाइम में इश्यू नहीं किया है तो इट विल बी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. ओके, इट विल बी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. अब जो भी है, मतलब दोनों केसेस में एक कॉमन पॉइंट है, वो जो डेट है वो कंपेयर करनी है विथ डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. इन शॉर्ट गाइस, व्हेन invoice is issued within time, then the time of supply is date of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. And when invoice is not issued in time, then it will be date of provision of service or date of receipt of payment, whichever is earlier. क्या है पॉइंट? सबको क्लियर है? गाइस, इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट फटाफट चैट विंडो में लिखो, इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी है दोस्तों, चैट विंडो, कमेंट बॉक्स, जो भी है. ओके, अच्छा, तो 30 days इज टाइम लिमिट फॉर मेकिंग इनवॉइस. बट बैंकिंग सर्विस है तो इफ इट्स अ बैंकिंग सर्विस देन नीति, इफ इट्स अ बैंकिंग सर्विस सुषमा, राहुल, if it's a banking service then it is not 30 days, then the time limit is 45 days. Correct? Then time limit is 45 days. अब देखो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे? तो ऑब्वियसली ये भी सवाल है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे. देखो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट गुड्स के केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सर्विसेज के केस में इंपॉर्टेंट है. यस, क्या लेंगे? तो ऑब्वियसली
दो चीजें हो सकती है, पहले बैंक में पैसा आ सकता है या पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ सकता है, तो विच एवर इज अर्लियर. Date of entry of receipt of payment in the books. So date of entry in the books or date of credit in the bank. बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा ना, पैसा आ गया तो. इन शॉर्ट देखो क्या हो सकता है, वो जो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई है, वो जो कस्टमर है, उसने आपको गूगल पे किया या उसने आपको एनईएफटी किया, आरटीजीएस किया, तो पहले रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, तो पहले रिफ्लेक्ट बैंक में होगा, उसके बाद बुक्स में होगा. तो यू हैव टू टेक विच एवर इज अर्लियर. एंड उसने आपको सपोज चेक दिया, तो पहले रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, पहले रिफ्लेक्ट होगा बुक्स में, उसके बाद बैंक में. एनीवेज गवर्नमेंट क्या बोलती है, वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ न्यूसेंस, वी वांट विच एवर इज अर्लियर. You don't postpone our time of supply. We want whichever is earlier. Is the point clear to all of you? If yes, please tell me accordingly so that we can go to questions based on this. You have to go to question number 8. Yes, question number 8. Guys, last two questions for the day. Then I am going to wish you good night and I am going to stop the session. So last two questions with lot of focus, with lot of energy, with lot of enthusiasm, with lot of josh. Last two questions. Chalo. A chartered accountant provides following details. Matlab means service provider. Yes. He's supplying service on 25th October and is issuing invoice on 28th October. He is supplying service on 25th October and he is issuing invoice on 28th October. So what happens? Is invoice issued within 30 days? Yes. Invoice is issued within 30 days. So important becomes, time of supply becomes date of issue of invoice. But always, compare with date of receipt of payment. So guys, what is the date of issue of invoice? 2810? Yes, it is 2810. And what is date of receipt of payment? Date of receipt of payment is entry in the books of accounts or credit in the bank. Whichever is earlier, वो हो जाएगा 610. So what will be time of supply? क्या होगा time of supply? It will be 2810 or 611, whichever is earlier. तो क्या होगा finally time of supply? Yes, Chandani ji, time of supply will be 2810. Very good. Very good. Is this there in the hints book? Obviously, yes. Where is the hints? Check. 8th question ka hint I have given you immediately after first question because I knew the sequence of solving. देख लो hints में 2810 or 611, whichever is earlier, 2810. And why we have selected 611, that also I have told you here. Did you understand? Did you understand, guys? With every session, your coverage of marks in the exam is going up, up, up. Chalo, next. Next question. SBI. SBI. So what do we understand by this? It's a banking service. So can you tell me, guys, how much
टाइम लिमिट वी शुड गिव फॉर मेकिंग इनवॉइस, हमने इनवॉइस के लिए क्या टाइम लिमिट देना चाहिए? वी शुड गिव टाइम लिमिट ऑफ 45 days from date of supply of service. Check. Here date of supply of service is 25/10 and invoice is issued on 30/11. Is it within time? Yes, it is within 45 days. So time of supply will be very good involvement shown by many of the students. Really very happy. So time of supply will be date of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. So your answer will be yes, 28/10/2020. Clear? Go to the hints book and check. 28/10/2020. 13/2 you're using. Systematically, you should do the presentation like this. First, write the entire provision of 13/2 and then make a mention that in this case, it shall be 30/11/2020 or 28/10/2020, whichever is earlier. Clear, all of you? Yes. And then, now, really guys, last question for today. Promise. As a company secretary provides following details. Date of provision of service is 15/10, but invoice is issued on 18/11. But invoice is issued on 18/11. Is it within time? Yes or no? Is it within time? Unfortunately, it is not within 30 days. So what will be happening in this case? इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट विल बी यस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जो बन गई है 15/10 और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 24/11 whichever is earlier. तो क्या होगा आंसर आपका? व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस? इट विल बी गाइस yes 15/10/2020. Very good, very good. Check in the solutions 15/10/2020. First of all, we have written the provision and then we have said that in this case, invoice is not issued within 30 days. So time of supply is date of provision of service or date of receipt of payment, whichever is earlier. That's why guys, it is earlier of 15/10/2020 and 24/11/2020, which happens to be 15/10/2020. The implication of this, what is the implication of this? हाँ चलो ये सर समझ में आ गया that time of supply is 15/10/2020. बट इससे प्रूफ क्या होता है? प्रूफ क्या होता है कि this service is assumed to be given on 15/10/2020. So whatever is the rate of GST and other law of GST as on 15/10/2020, that will apply. And it will be deemed that service is given on 15/10/2020, that is 15th October 2020. And GST on this will be paid by 20 of next month. So GST on this will be paid by 20 November 2020. Is it clear to all of you? Yes or no? So guys, do you want revision in revision? Do you want revision in revision? First of all, this is a fast track batch. Do you want super fast track? In next 2 minutes, a recap of what was done in last 3 sessions? Yes or no? If you want that, I can give you that also. Mega concise things.
Yes, so I'll keep a blank page here in front of me. Let's quickly do revision in revision. Okay. So we did valuation. Valuation is section 15. Section 15 has 5 subsections. Subsection 1 is assessable value is equal to transaction value. Transaction value means price actually paid or payable for supply of goods or services or both. But two conditions are to be satisfied. Supplier and recipient of supply should not be related and price should be sole consideration. Sole means only. Whenever such transaction value is to be taken as assessable value, then you have to include following things as given in subsection 2. Inclusions are A. Taxes other than GST. B. Expenses incurred by recipient of supply on behalf of supplier. C. Incidental expenses like packing, transport, payment charges, installation, etc. D is interest or late fees payable by recipient of supply to the supplier. And lastly, subsidies which are directly linked to the price of the goods other than central government and state government subsidies. And lastly, subsection 3 talks about exclusion. What is to be excluded? We should exclude discount. Which discount? Discount which is given before supply, discount which is given after supply. Now, before supply means what? Before supply means a discount like trade discount. To exclude this discount which is given before supply, this discount should be recorded in the invoice. For discount which is given after supply, three conditions should be satisfied. The terms and conditions of this discount should be existing at the time of supply. Secondly, the discount should be related to the invoice. And lastly, input tax credit attributable to the discount should be, yes, reversed by the recipient of supply. And then, guys, we went to subsection 4. What is subsection 4? Subsection 4 is when TV cannot be taken as AV, maybe because conditions are not satisfied, or maybe because there is no TV. There is no transaction value at all. Because it may happen that the supply the is without consideration. The activity is without consideration. Still, it was called as supply as per Schedule 1. In that case, what to do? In that case, go to rules, CGST rules, which are rule number 27 to 35. Is your professor going to not tell you these rules in the super first revision? It's not like that. Your professor will tell you these rules also. 27 to 35. Just show some love to him by saying, yes, sir, go ahead, tell us the rules. Before that, I will tell you 15.5. 15.5 is where government notified goods, for government notified goods, value will be as prescribed. Okay, and this 15.5 will have overriding effect over 15.2 and rather 15.1 and 15.4. Means what? Means what? Suppose goods are notified under 15.5, then valuation will be as prescribed. कभी भी valuation 15.1 या 15.4 से नहीं होगा if goods are notified under 15.5. Okay, and अब rules देखते फटाफट. But do you want the rules from me? Do you want super fast revision of rules from me? If yes, tell me, तभी आगे बढ़ूंगा. नहीं तो we are all set to end the session. बोलो फटाफट बोलो चैट विंडो में. Yes or no? 27. Where price is not the sole consideration. Where price is not the sole consideration, then you go to 27.
In that, you will try to take open market value. If open market value is not available, what will you do? You will take consideration plus consideration plus the value of goods which are not in money terms. If that is also not available, you will take value of supply of goods of like, kind and quality. If that is also not available, you will take, guys, what? Then you will take, go to rule 3031, which is nothing but your residual. 28 is for what? When supply is between, 28 is when supply is between related persons. 29 when supply is between principal and agent. 3031 is what? 3031 is your residuary. In 30, you take 110% of value of cost of those goods or service. 31, you apply general principles. 32 is specified what? Specified services. So in 32, you have seen foreign exchange, means service of foreign currency exchange. Then you have seen travel agent, air travel agent, life insurance service, then dealer of second hand goods, vouchers. All these things you have seen in 32. 33, pure agent. 34, how to convert foreign exchange in rupees for the sake of valuation. And guys, lastly, 35, that is when the value given is including GST, and how to exclude the GST element. Guys, that's it from my end. If you have liked the session, please do like the video. Please do like the video and please do comment. And keep the MEPL channel subscribed. Yes, keep the channel subscribed and hit the bell icon. That's it, guys, from my end. I'll see you in the next session on the MEPL app. So be confident. Keep on studying in a very systematic manner and keep smiling. That's it, guys. That's it. Good night. Bye bye.